हेलो फ्रेंड्स, अब ये टेस्ट नंबर 9 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर एब्सेंट फ्रॉम एनी इकोसिस्टम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स विल अकर। तो एबो बोथ यानी हर्बीवोर्स विल नॉट सर्वाइव और कार्निवोर्स विल नॉट सर्वाइव, कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी कंज्यूमर से नहीं होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the gradual and fairly predictable change in the species compositions of a given area is called variations. Question number 3. Primary consumers are those which feed upon photosynthetic plants. Which ecosystems has the maximum biomass? Forest ecosystems. Question number 5. Which of the following is not a characteristics of humans? अच्छा, humans का characteristics नहीं है, तो it is further degraded by the process of humification. No. अच्छा, ह्यूमस कहा था, ह्यूमस का कौन सा करेक्टर्स नहीं है, यानी कौन सी विशेषता नहीं है। बाकी देख लेते हैं कौन सा करेक्टर है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सच एज लिग्निन एंड सेलुलोज, is colloidal natures and serves as a reservoir of nutrients. It is highly resistant to microbial actions and undergoes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ प्लेनेट इसको बोलते हैं, और वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग में, और कैरेट ग्रास लंटाना को नहीं बोलते हैं, पार्थेनियम को बोलते हैं, और फार्मर्स ऑफ फ्रेंड फंजाई नहीं होता है, अर्थवॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड ऑफ वर्ल्ड। एकॉर्निया, इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, और टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। विच प्लांट कैन बी रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग वाटर और अ लाइम इन स्क्रबर SO2। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ वीड, नील पर्च नहीं, बाकी पार्थेनियम लंटाना एकॉर्निया है एक्जोटिक। फिर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा, बाकी लोग तो फिलिप वाले करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली sound estimate made by Robert May place global species diversity at about 7 million. 3 Mile Iceland and Chernobyl incident are related to the pollutions of radioactive pollutions. Question 14. The total annual productivity of whole biosphere is 170 billion tons. Desert lizard maintain its body temperatures through behavioral activity. Question number 16. Which one of the following fish is being illegally introduced by the aquaculture proposes and is posing a threat to indigenous catfish of Indian rivers? Clarius garipinus. Question 17. Which of the following is not the part of decomposition? कौन सा पार्ट नहीं, तो वेदरिंग नहीं है, बाकी फ्रेगमेंटेशंस, हेमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म है। Question 18. Which is the smallest unit of ecological hierarchy? Organisms. Question 19. In the final stage of hydrosphere, the area is characterized as less fertile soil, increased net community productivity, increased complexity in food web. Question number 20. Monarch butterfly is highly distasteful to its predator because a special chemical acquired in its body form from a poisonous weed. Question 21. Which of the following is correctly for the specific interaction shown in the figure? अच्छा, म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। Question number 22. According to Allen's rule, the mammals from colder climate, the colder climate have shorter ears and shorter limbs. Question number 23. A population has more young individuals compared to the
older individuals, that would be the status of the populations after some years. It will increase. Lichens are the associated of fungus and algae. Question 25. An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystems? C. All of the following are included in ex situ conservation except sacred ग्रुप्स को छोड़कर बाकी बोटेनिकल गार्डन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और सीड बैंक ये सब ex situ कंजर्वेशन है बाकी सैकर्ड ग्रुप इन situ कंजर्वेशन अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ इनवेसिव एलियंस स्पीसीज इन इंडियन कंटेस्ट साइनोडॉन नहीं है बाकी लेंटाना पार्थिनियम कॉर्निया है catalytic converters which are fitted into automobiles for the reducing the emissions of poisonous gases possess which of the following metals as catalyst इसमें पैलेडियम और प्लेटिनम और पैलेडियम और रोडियम सारे आते हैं फिर क्वेश्चन 29 which of the following statement is correct the Steeler sea cow is an extinct animals question 30 an example of ex situ conservation is seed bank बाकी सारे के सारे इन situ conservation है वर्ल्ड ओजोन डे celebrated on 16 September the zone of atmosphere in which of the good ozone layer is present is called stratosphere इसमें मोस्टली क्वेश्चन है ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस में डायरेक्ट पूछे गए हैं वही रखे हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बस ये है आपकी बात थोड़ा रिसर्च रीजन पूछे जाते हैं which one of the following populations interactions is widely used in medical science for the productions of antibiotics MNCism the principles of competitive exclusions was stated by G.F. Gauss question 35 which of the following is not component of physical and abiotic environments organisms microbes नहीं बाकी अब देख रहे हैं इसमें कहा 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर्स लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन 10% वाला रूल लगाएंगे इसमें प्लांट के पास 20 है इसके पास जाएगा तो 2 बचेगा फिर इसके पास जाएगा 0.2 बचेगा फिर इस और पिकॉक के पास बचेगा 0.02 Red list contains data or information on threatened species. Niche is a functional role played by the organisms where it live. A matching type is eutrophications, nutrient enrichment, sanitary landfills, waste disposal, snow blindness, ultraviolet B radiation, genome cultivation, deforestation. Question of 40. In an area where DDT had been used extensively, the populations of bird declined significantly because premature breaking of egg cell. Question 41. After exponential increase, populations growth declines and stagnates. The growth curve is S-shaped. Which of the following place have sub-zero temperatures? तो हाई एल्टीट्यूड प्लेस एंड पोलर एरिया क्वेश्चन ऑफ 43 गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources question 44 which of the following is the only inorganic liquid occurring naturally on earth can functions as resources conditions or habitat water question of 45 a greenhouse gas among SO2 chlorofluorocarbons N2O is responsible for global warming or ozone depletion question of 46 sacred groups are useful in conserving rare and threatened species अब इन situ ex situ कंजर्वेशन इन situ अच्छा देखना है नेशनल पार्क और गार्डन botanical garden question of 48 which pollutants mainly affect the respiratory systems in humans and animals suspended particulate matter in air question of 49 water pollution act was passed by the government of India in 1974 a persons using an air conditioner
in summer and heater in winter. The person's A completes his homeostasis through artificially. Question 51. If an organism move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return when a stressful period is over, it is shown by Siberian crane. Question 52. Which of the following represents ecological diversity? Diversity of ecosystems level. Question 53. To reduce plastic waste in Bangalore, Ahmad Khan developed polyblend. Question 54. The total amount of energy fixed in producers and ecosystems, including the organic matter used up in respirations during measurement period, is known as gross primary productivity. How much part of ISR and incident solar radiations and par any photosynthetic active radiations are used in photosynthesis respectively 1 to 5% and 2 to 10%. Question 56. Species diversity decrease as we move away from equator towards poles. Question 57. Which organism is a detrivore and also help in fragmentations of detritus? Earthworms. Question number 58. The structure of biome is mainly decided by which abiotic factor? Only temperatures and only precipitations. Who is known as the father of Indian ecologist Ramdev Misra? Question number 60. Some species colonies on an area and their populations become more numerous, whereas populations of other species decline or even disappear. This change occurs during succession. Question number 61. Which is a potent force for organic evolutions? Interspecific competition. Ecotone is a zone of transitions between two communities. Question 63. Which of the following is not an example of adaptive in xerophytes? Presence of stomata ये not है बाकी काम pathway और thick cuticle leaves reduces to spine ये देखने को मिलती. Question 64. What parameters are used for tiger census in our country national parks and sanctuaries? तो pug marks and fecal periods के दौरान पहचाने की टाइगर का पता लगाने के लिए. How many of the following ecosystems is not an example of terrestrial ecosystem? Forest, grassland, desert, pond, lake, aquarium. तो तीन है इसमें से. Question number 66. Associations in between two organisms such as algae and fungi in lichens is known as mutualism. Question number 67. If the fixed carbon atoms already have passed through three species, the trophic level of the fourth species would be tertiary consumers. Question number 68. Organizations responsible for maintaining red data book is IUCN. A higher biochemical oxygen demand in a particular segments of a river indicates that the segment is highly polluted. Question number 70. The historic convention on biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 is known as the Earth Summit. Question number 71. Identify the organisms on the basis of following characteristic. Have simple digestive systems, have lost its unnecessary sense organs during evolutions, have high reproductions potentials, presence of suckers, parasite. Question 72. Environmental Protection Act 1986, Air Prevention and Control of Pollutions Act 1981, Water Act 1974, Amendment of Air Act to include noise 1987. Natality refers to birth rate. 74.
Plants which produce characteristics nematophores and so vivipary belong to हेलोफाइट्स इनकरेक्ट पूछा है तो कंगारू डैट लैक एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन तो लैक नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 76 इन इकोसिस्टम बिल्डिंग अप द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैन occur due to under anaerobiosis low temperatures. Question number 77. By the end of 2002 in Delhi, which step is completed for reducing vehicular pollutions? Buses were converted to run on CNG. अच्छा इसमें बताना है देख डी कॉनिफरस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ए क्वेश्चन नंबर 79 in a forest ecosystem trees occupy top layer serves the second herbs and grasses occupy bottom layers this vertical distributions of species represents stratification question number 80 prime contaminants leading to cultural or accelerated eutrophications are phosphates and nitrates first stable फिर expanding and third is declining question number 82 there are a number of reasons why we should conserve biodiversity choose odd one out with respect to broadly utilitarian reasons तो इसमें दिया है मेडिसिनल वैल्यू एंड फूड सोर्स क्वेश्चन नंबर 83 यूरो थर्ड इज emissions norms for reducing sulfur and aromatic hydrocarbons question 84 mango tuna fish snow leopards are externothermal question 85 tropics accounts for greater species diversity because they are oblique have remained relatively undisturbed eco sanitation is sustainable ecosystems for handling human excreta find out extra match with respect to salinity in parts per thousand hypersaline legumes more than 100 question number 88 most important cause for driving plants and animals to extinctions can be exemplified by loss of tropical rainforest question number 89 what percentage of forest for hills has been recommended by National Forest Policy 1988 of India 67%. Smaller animals tend to lose body heat very fast as compared to larger animals because they have higher surface area to volume ratio. Question 91. Of which of the following is a very important parameters chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factors on population's growth intrinsic rate of natural selection increases question 192 smaller animals tend to lose body heat very fast as compared to larger animals because they have higher surface to volume ratio इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन अच्छा इनकरेक्ट कहा तो ओनली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन शो कंपटीशन ऐसा ज़रूरी नहीं है फिर क्वेश्चन 94 बेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट्स मॉडरेट परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सक्सेशंस ऑन अ बेयर रॉक xeric to मेजिक Question 96. The raw material for making polyvalent is plastic film waste. Question 97. The annual net primary productivity of whole biosphere is 170 billion tons with contributions of the ocean is approximately 33%. Question 98. Parasites evolved special adaptations in accordance with their lifestyles. Choose odd one out with respect to these adaptations. Simple life cycle and complex morphological anatomical features. फिर मैचिंग टाइप
इन्वायरमेंटल एक्ट अभी देखा था 1986। एयर प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस एक्ट 1981। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस एक्ट 1974। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। फिर लास्ट क्वेश्चन, प्राइम कंटामिनेंट्स लीडिंग टू कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रिफिकेशंस आर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी बेस हैं और इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो काफ़ी टाइम भी नहीं लगता है। 20 मिनट दे सकते हैं, 20 मिनट आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा 100 क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखा करें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।